जुले बच्चों, दिस इज लेक्चर नंबर 2, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, क्लास 12 मैथमेटिक्स। तो लेक्चर नंबर 1 में कल हमने किया था मैक्सिमम डिफिनेशंस एंड उसके बेसिक्स किए थे। जैसे इस चैप्टर में हमारा कौन सा बेसिक्स यूज होने वाला है, लिमिट्स होने वाला है, फंक्शंस होने वाले हैं, ये सारा हमने कल डिस्कस लेक्चर नंबर 1 में किया हुआ है बच्चों। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो इसके लिए पहले आप एक फंक्शन को कंटिन्यूअस किसे कहते हैं, जैसे एक फंक्शन एक पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक नहीं होता है तो उससे हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। उसको मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इक्वल टू, अगर f ऑफ c हो दीजिए, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c के इक्वल हो तो हम उस फंक्शन को कंटिन्यूअस एट पॉइंट c कहते हैं। तो लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन है आपका बच्चों, प्रूफ दैट द फंक्शन fx इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू 5। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। गिवन फंक्शन क्या है हमारा बच्चों, गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3। इस फंक्शन का हमने कंटिन्यूटी चेक करना है। पहला है हमारा 8x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे हम। तो क्या करेंगे हम बच्चों, लिमिट लेते हैं इसका, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 आप fx का वैल्यू लीजिए, दिस इज 5x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 0 माइनस 3, दिस इज 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 लेंगे तो दैट इज f ऑफ 0, दिस इज आल्सो इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 माइनस 3 इज माइनस 3। तो यहाँ से हमें आ रहा है लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x अप्रोचेस टू 0 आपका आ रहा है माइनस 3, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 भी आ रहा है माइनस 3। अगर ये दोनों इक्वल आते तो इस फंक्शन को हम कहेंगे कंटिन्यूअस एट 0, सी विच इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 f of x is equal to f of 0, therefore the function is continuous, the function is क्या है बेटा, continuous है, continuous at x इक्वल टू 0। ठीक उसी तरह बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप कीजिए एट x इक्वल टू माइनस 3 पे चेक कीजिए और 5 पे कीजिए बच्चों। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज इज एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। नीचे आपका दिया गया है फंक्शंस ABCDE, तो उसमें से फंक्शन के कंटिन्यूटी को हमने एग्जामाइन करना है बच्चों। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर डी लिया, ABC आपका बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर डी है fx इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 5x माइनस 5। तो मॉड्यूलस जब यहाँ पे आता है तो उसका बेसिक में थोड़ा डिफिनेशन बताना चाहूंगी। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है बच्चों, f ऑफ x इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, दिस इज इक्वल टू माइनस x आता है जब x इज लेस देन 0 और x आता है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको थोड़ा जैसे आप सोच रहे होंगे, हमने पहले से प्रीवियस क्लासेस में किया है, मॉड्यूलस ऑफ अगर कोई नेगेटिव नंबर आता है, फॉर एग्जांपल हम -5 लेंगे, मॉड्यूलस ऑफ -5 इज, इसका पॉजिटिव आता है 5, तो इससे रिलेट करने के लिए हम पॉजिटिव 5 कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ -5, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे -5 लेस देन 0 है, ठीक है, तो इसका मॉड्यूलस क्या आएगा, माइनस ऑफ यही अंदर वाला नंबर -5। ठीक, इसलिए मॉड्यूलस ऑफ x इज माइनस ऑफ x फॉर x लेस देन 0। तो पॉजिटिव के लिए तो क्या आएगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड्यूलस ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 आएगा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द डिफिनेशन फॉर मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, तो इस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं fx इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5। तो यहाँ पे फंक्शन को आप एग्जामाइन कीजिए, -5 प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल हियर। तो हम चेक करते हैं व्हेन x अगर लेस देन 5 हो, अगर x का वैल्यू लेस देन 5 हो तो x माइनस 5 क्या आएगा बच्चों, x माइनस 5 इज लेस देन 0 आएगा, x माइनस 5 नेगेटिव आएगा। तो इसका मॉड्यूलस फंक्शन क्या आएगा, f ऑफ x इक्वल टू
x माइनस 5 को हम डिफाइन करते हैं बच्चों, फॉर x लेस देन 5 के लिए मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 क्या आएगा, माइनस ऑफ x माइनस 5। क्यों, दिस थिंग इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो मॉड्यूलस ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज माइनस ऑफ दैट नेगेटिव नंबर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे x लेस देन 5 के लिए। तो x ग्रेटर देन 5 के लिए क्या आएगा बच्चों, x ग्रेटर देन या इक्वल टू 5 के लिए मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 क्या आएगा, x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज पॉजिटिव आएगा x ग्रेटर देन 5 के लिए। ठीक है, तो मॉड्यूलस वही रहेगा, दिस इज x माइनस 5 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो इस फंक्शन को हमने इस तरह से डिफाइन किया, f(x) इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 5 इज माइनस ऑफ x माइनस 5 फॉर x लेस देन 5, x माइनस 5 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, तो इसका हम कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इसके डोमेन को थोड़ा स्टडी करते हैं। ठीक है, तो डोमेन मींस द वैल्यूज ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो वैल्यूज ऑफ x को जैसे हम थोड़ा देखेंगे इस पे, तो फॉर एग्जांपल इस फंक्शन का कहीं पे 5 है। ठीक है, तो कोई नंबर होगा जो लेस देन 5 है, x लेस देन 5 भी है इसका डोमेन में। ठीक है, x इक्वल टू 5 भी है और x ग्रेटर देन 5 भी है। ठीक है बच्चों, तो डोमेन कितना कितना नंबर आएगा, डोमेन को हम अगर कैटेगरी करते हैं तो कोई नंबर आएगा जो 5 से छोटा हो, कोई भी नंबर लेंगे। ठीक है, तो एक तो 5 आएगा। ठीक है, तो थर्ड आएगा आपका x ग्रेटर देन 5। डोमेन में 3 नंबर्स आएंगे, हमने इस कंटिन्यूटी को चेक करेंगे एट एवरी पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ओके बच्चों, तो अब हम केस नंबर 1 लेंगे जब x लेस देन 5 हो। तो x लेस देन 5 के लिए भी कोई भी नंबर लेंगे जिसे हम डिनोट करते हैं c से। ठीक है बच्चों, लेट x इक्वल टू c सच दैट c लेस देन 5। तो x लेस देन 5 के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है बच्चों हमारा, x लेस देन 5 के लिए 5 माइनस x, f(x) इक्वल टू 5 माइनस x। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू c लेंगे और लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचिंग टू c लेंगे। लिमिट x अप्रोचिंग टू c f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू c f(x) का वैल्यू लेंगे हम 5 माइनस x, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस x का वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं तो c 5 माइनस c, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट c लेंगे तो f ऑफ c, दिस इज आल्सो इक्वल टू 5 माइनस c। ये लिमिट x अप्रोचिंग टू c f ऑफ x आपका इक्वल आया f ऑफ c के बराबर। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट c व्हेन c इज लेस देन 5। तो केस नंबर 1 में हमारा आया जब x लेस देन 5 है तो फंक्शन वहां पे कंटिन्यूअस है। अब हम केस नंबर 2 लेंगे, केस नंबर 2 यहाँ पे देख लीजिए, व्हेन x इज इक्वल टू 5 पे लेंगे बच्चों हम। x 5 पे गौर कीजिए, आप ध्यान दीजिए, when x इक्वल टू 5, जब x 5 हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों लेना है। क्यों बच्चों, क्योंकि जब x 5 को अप्रोच करते हैं फ्रॉम लेफ्ट से, दैट इज x लेस देन 5, तब फंक्शन 5 माइनस x है। When x अप्रोचिंग टू 5 फ्रॉम राइट, राइट से जब 5 को x अप्रोच करता है फंक्शन का वैल्यू है x माइनस 5। यहाँ पे डिफरेंट है दोनों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लेंगे एक लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू 5 फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है बच्चों, f(x) का वैल्यू क्या है बच्चों, 5 माइनस x, 5 माइनस x, यहाँ पे 5 पुट कीजिए, 5 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0। और उसके बाद हम लेंगे राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे देखिए लिमिट x अप्रोचिंग टू 5 फ्रॉम राइट, प्लस का मीन्स 5 फ्रॉम राइट, f ऑफ x, ये आया आपका लिमिट x अप्रोचिंग टू 5 फ्रॉम राइट। ठीक है बच्चों, 5 फ्रॉम राइट मीन्स x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5 के लिए f(x) हमारा है x माइनस 5। यहाँ पे भी वैल्यू 5 माइनस 5, ये भी आया आपका इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आया तो लिमिट एग्जिस्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम निकलेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 5, दैट इज f ऑफ 5। x इक्वल टू
5 के लिए आपका फंक्शन क्या है x माइनस 5, ये भी है आपका 5 माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0. When the limit and the value of the function at 5 is equal, therefore limit x tends to 5, f of x is equal to f of 5. तो क्या आया बच्चों, आपका फंक्शन 5 पे भी कंटिन्यूअस है, x लेस देन 5 पे कंटिन्यूअस हुआ था तो x 5 पे भी कंटिन्यूअस है. अब हम थर्ड केस लेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 5. नाउ बच्चों केस नंबर थर्ड इज व्हेन x इक्वल टू c such that c greater than 5, then f of x है हमारा x माइनस 5. तो यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं हम, लिमिट x अप्रोचिंग टू c f of x is equal to लिमिट x अप्रोचिंग टू c fx का वैल्यू x माइनस 5, दिस इज इक्वल टू c माइनस 5. ठीक है बच्चों, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट c इज f of c is equal to f of c भी क्या है आपका c माइनस 5. Therefore limit x approaching to c f of x is equal to f of c. So the function is continuous at x greater than 5. इसका मतलब क्या हुआ, the function is continuous at every point in the domain of f. तो this function is a continuous function बच्चों. अच्छा बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 5 आप कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय. फिर क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 12 तक दिया है, तो इसमें से मैं सारे क्वेश्चन तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते, तो मैं क्वेश्चन नंबर पहले 6 लूंगी बच्चों. इस पे हमने क्या चेक करना है, डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f. ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है हमारा f of x इज इक्वल टू 2x plus 3 if x is less than equal to 2. यहाँ पे 2x minus 3 if x is greater than 2. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे डोमेन क्या है, आप थोड़ा एक लाइन खींच के रफ पे देख लीजिए. तो इसमें डोमेन मीन्स x का वैल्यूज क्या क्या होने वाला है. एक तो 2 प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल, तो x इक्वल टू 2 भी है, x लेस देन 2 भी है. ठीक है बच्चों, तो x ग्रेटर देन 2 भी है. फिर यहाँ पे भी हमारा क्या होने वाला है, तो 3 केसेस हमें यहाँ पे मिलते हैं, when x is less than 2, when x is equal to 2, when x is greater than 2. तो इसका थोड़ा मैं हिंट जैसा शॉर्टकट में दे दूंगी बच्चों, क्योंकि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं ये. तो जैसे पहला क्वेश्चन किया था ठीक उसी तरह है. यहाँ पे आप केस नंबर 1 लीजिए. कौन सा केस लेंगे, केस नंबर 1, when x is equal to, हम कोई नंबर रियल नंबर c लेंगे such that c is less than 2. x less than 2 के लिए फंक्शन हमारा क्या है बच्चों, f of x है हमारा 2x plus 3. तो यहाँ पे लिमिट हम कॉमन लिमिट लेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट ना लेने से भी चलेगा, क्योंकि सेम एक ही फंक्शन है. x जितने भी नंबर लेस देन 2 है उसके लिए ओनली वन फंक्शन है हमारा 2x plus 3 बच्चों. ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे हम लिमिट x tends to c f of x, दिस इज लिमिट x tends to c f x आया 2x plus 3, दिस इज 2c plus 3 बच्चों. ठीक है, तो f of c भी क्या आएगा हमारा, वो भी 2c plus 3 आएगा. ये मैं डिटेल में नहीं करूंगी, दिस इज हिंट. तो इस यहाँ पे भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो रहा है, कहाँ पे, when x is less than 2 पे. तो केस नंबर 2 हम लेंगे, तो केस नंबर 2 पे क्या है, when x is equal to 2. अब x equal to 2 पे जिस तरह से हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, ठीक उसी तरह आप ध्यान दीजिए. x इक्वल टू 2 में जब x अप्रोच करते 2 को फ्रॉम लेफ्ट से तो फंक्शन अलग है, जब x अप्रोच करते हैं 2 को फ्रॉम राइट से तो फंक्शन अलग है. तो क्या करना चाहिए हमें, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है अलग से और राइट हैंड लिमिट लेना है. अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों
कोइंसाइड करते हैं और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल आते हैं तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस। अगर नहीं आए तो उस फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट 2, ये आप कीजिए, और थर्ड केस में कंटिन्यूअस होने वाला है, ये आप कर लीजिए बच्चों। हम अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द फंक्शन इज गिवन एज f of x इक्वल टू x by modulus of x if x is less than 0 and minus 1 if x is greater than equal to 0। तो यहाँ पे कितना केसेस बनता है अब हम देखेंगे। x लेस देन 0 एक है, x इक्वल टू 0 पे भी हम फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करेंगे और x ग्रेटर देन 0 पे भी चेक करेंगे। तो पहले की तरह हम लेंगे केस नंबर 1, एट x इक्वल टू c कोई नंबर लेंगे सच दैट c इज लेस देन 0। तो कोई भी नंबर जो लेस देन 0 के लिए फंक्शन हमारा क्या है बच्चों, f ऑफ x इज इक्वल टू x बाय मॉड्यूलस ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिमिट लेते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू c f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू c f x इज x divided by modulus of x, this is equal to limit x approaching to c x by modulus of x क्या आएगा बच्चों, पहले हमने modulus फंक्शन डिफाइन किया है, तो कोई भी नंबर जो लेस देन 0 है नेगेटिव के लिए modulus of x is माइनस ऑफ x। ठीक है बच्चों, तो x हमारा डिवाइड हो जाता है, दिस इज लिमिट x अप्रोचिंग टू c 1 आता है, दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, तो एंड f ऑफ c लेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट c इज c डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ c। तो c क्या नंबर है, नेगेटिव नंबर है, c इज लेस देन 0, दिस इज c डिवाइड बाय माइनस c, दिस इज इक्वल टू -1। तो लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों हमारा इक्वल आया, ये देखिए आप। तो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, फंक्शन इज continuous at x less than 0, less than 0 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस आया। at x equal to 0 the function is given as f of x is equal to -1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x approaching to 0 from left, f of x is limit x approaching to 0 from left, fx is x by modulus of x, this is equal to limit x approaching to 0 from left, x by minus x। क्यों बच्चों, when x approaching to 0 from left that is a negative number। ठीक है बच्चों, तो modulus of x is minus of x, ये x डिवाइड हो जाता है 1 है, तो यहाँ पे आया आपका -1। ठीक है, तो लिमिट x approaching to 0 from right, f of x is limit x approaching to 0 from right। अब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x approaching to 0 from right fx, लिमिट x approaching to 0 from right, fx का वैल्यू क्या है, fx क्या है जब x का वैल्यू थोड़ा ग्रेटर देन 0 हो, तो दैट इज -1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे x कोई है नहीं, तो यहाँ वैल्यू आता है -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आया, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकलेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज f ऑफ 0। तो x इक्वल टू 0 के लिए हमारा फंक्शन क्या है, दैट इज आल्सो इक्वल टू -1। ये तीनों इक्वल आया है, तो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, the function is continuous at x equal to 0 बच्चों। तो केस नंबर 3 is when x is greater than 0, x कोई नंबर c लेंगे such that x is greater than 0, तो fx क्या दिया है हमारा बच्चों, fx is -1। तो यहाँ पे भी हम कॉमन लिमिट लेंगे, लिमिट x approaching to c, f of x is equal to limit
x approaching to c minus 1, this is equal to minus 1. ठीक है बच्चों, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज आल्सो इक्वल टू एफ ऑफ सी. एफ ऑफ चाहे यहाँ पे आप सी एक्स जो भी पुट करो, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज माइनस 1, तो यहाँ पे भी इक्वल आया लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तो दिस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c व्हेन c इज ग्रेटर देन 0. तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन दिस फंक्शन. ठीक है बच्चों. अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया है. तो 10, 11, 12 ऑलमोस्ट सेम है. आप कीजिए. क्वेश्चन नंबर 13 पे है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन. तो ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही है. तो आप प्रैक्टिस कीजिए. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इंटरेस्ट आएगा, उतना आपको अच्छा लगेगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय. वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है. क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16. तो इसमें से मैं एक क्वेश्चन लूंगी. क्वेश्चन नंबर 15 लेती हूँ. ठीक है बच्चों. तो क्वेश्चन नंबर 15 है, एफ एक्स इज डिफाइंड बाय दिस इज 2x if x is less than 0, 0 if x is greater than equal to 0, less than equal to 1, or for x if x is greater than 1. ठीक है बच्चों. तो ये है आपका फंक्शन गिवन. तो पहले की तरह आप डोमेन आप देख लीजिए, इसमें क्या क्या डोमेन आ रहा है. तो ठीक अच्छी तरह से देख लीजिए. एक तो आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1 है. 0 से 1 तक तो है ही है. ठीक है बच्चों. तो x लेस देन भी 0 है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, और x ग्रेटर देन 1 है. तो यहाँ पे डोमेन आपका सारा रियल नंबर आ रहा है. तो केस कितना बन रहा है यहाँ पे हमारा, x लेस देन 0. फर्स्ट केस x इक्वल टू 0. सेकेंड केस, तो x कोई नंबर आता है जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली लेस देन 1, 1 और 0 के बीच में आता है. थर्ड केस, तो x इक्वल टू 1 पे भी आ रहा है, तो x ग्रेटर देन 1 भी है. यहाँ पे 5 केसेस एराइज हो रहे हैं बच्चों. तो हर एक पॉइंट पे हमने इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है. ये देख लीजिए, x लेस देन 0 पे देखना है, उस पे हम सिर्फ कॉमन लिमिट निकलेंगे. तो x इक्वल टू 0 पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लेना है. तो x 0 और 1 के बीच में जो भी नंबर हो, ना 0 हो ना 1 हो, बिटवीन 0 एंड 1. ठीक है बच्चों. तो इस पे भी देखना है, ये थर्ड केस है. तो x इक्वल टू 1 पे भी देखना है, दिस इज फोर्थ केस. और x ग्रेटर देन 1 पे देखना है, दिस इज फिफ्थ केस बच्चों. तो इसका डोमेन क्या क्या आ रहा है आप देख लीजिए. ठीक है. तो 5 केसेस अराइज हो जाते हैं. तो हम केस 1 बाय 1 लेते हैं. ठीक है बच्चों. केस नंबर 1, at x equal to c such that c less than 0, c less than 0 के लिए फंक्शन क्या दिया है हमारा, fx is equal to 2x. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे लिमिट ले लो. लिमिट x approaching to c, f of x is लिमिट x approaching to c, f of x की जगह 2x, this is 2c. The value of the function is f of c, this is also equal to 2c. ये दोनों इक्वल आया तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c such that c लेस देन 0. ठीक है. तो हम केस नंबर सेकेंड लेते हैं. तो एट x इक्वल टू 0 पे हम देखते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट. क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 पे लेफ्ट से जब अप्रोच करते हैं फंक्शन अलग है, राइट से जब अप्रोच करते हैं तो फंक्शन डिफरेंट है बच्चों. दिस इज लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, 0 फ्रॉम लेफ्ट, x लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है, 2x. ठीक है बच्चों. 2 zeros are, दिस इज इक्वल टू 0. और राइट हैंड लिमिट लेते हैं. लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम राइट, f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम राइट. तो f ऑफ x क्या है, x ग्रेटर देन 0 के लिए 0 है. ठीक है. दिस इज 0. लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0, f ऑफ 0, x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन क्या है, 0 है. द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 आल्सो. ठीक है बच्चों. तो हम केस नंबर थर्ड लेते हैं. थर्ड केस इज
x कोई नंबर c लेंगे such that c is less than 1 लेंगे और c is greater than 0. 0 से बड़ा 1 से छोटा उसके बीच में कोई नंबर लेते हैं c लेते हैं हम, ठीक है बच्चों. तो इसके लिए ये फंक्शन क्या है, f of x क्या दिया है, x strictly greater than 0, strictly less than 1 के लिए है हमारा फंक्शन f of x equal to 0 बच्चों, ठीक है बच्चों. तो लिमिट x approaching to c f of x, limit x approaching to c f of x is 0, this is equal to 0. Our value of the function is f of c, this is also equal to 0 बच्चों. तो this function is continuous at, the function is continuous at c such that c belongs to open interval 0-1. Open interval 0-1 means any real number between 0 and 1 excluding 0 and 1. ठीक है बच्चों. ओके बच्चों, तो मैंने 2-3 केसेस मैंने कर लिया है, तो 2 केसेस आप कीजिए. तो दिस इज ऑल अबाउट कंटिन्यूटी. तो कल हम मिलेंगे. कंटिन्यूअस है तो किसी का वैल्यू क्या होना चाहिए उसके साथ. थैंक यू जूली. Jule, I'm Sonam Spalzin. I'm a teacher at Government High School Shara, and I'm being appointed by Department of Education UT Ladakh to give classes. For today my topic is life processes. We will discuss about all the life processes in these classes. So let me begin by a little introduction of the chapter. What is life? Our planet Earth is the only planet where life is possible. So our planet Earth is unique in its own way, and the living beings on our planet Earth, they live, they grow, and they die, and eventually they become part of nature. Right, so living beings are differentiated from the non-living entities on the basis of various parameters. These parameters are known as life processes. Alright, so what are life processes and why are they important? Life processes in matlab maintenance of organisms is essential. जब भी organisms या तो move कर रहा है या rest कर रहा है या sleep कर रहा है, जब भी maintenance की ज़रूरत होती है, क्योंकि human beings हो या living plants हो या कोई भी organisms हो, their body should always function. And if we define life processes, it can be defined as the processes which together function in the maintenance of an organism. The processes which together function in the maintenance of an organism is the definition, almost the definition of life processes, and we have many examples of life processes like nutrition, respiration, excretion, circulation, about which we will discuss one by one in our coming classes. Alright, so there are many types of organisms, as you all know, that there are unicellular organisms and there are multicellular organisms. The unicellular organisms means organisms which are formed of only single cell. For example, amoeba. In these organisms क्या होता है, ये जो सारे functions होते हैं, ये जो सारे life processes होते हैं, जैसे कि nutrition, जैसे कि respiration, वो सारे जितने भी functions होते हैं, जितने भी processes होते हैं, is performed by a single cell. Alright, so in unicellular organisms, all the activities are done by a single cell, whereas in multicellular organisms like higher plants, like animals, like human beings, ये सारा जो activities होता है, सारा जो functions होता है, processes होता है, there are specific well-defined systems for such processes. जैसे कि human beings में we will talk about nutrition, we will talk about plants का nutrition, and so forth in the coming classes. Nutrition can be defined as the process of acquiring food that is needed for the nourishment and sustenance of living organisms. It can be defined as जब न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करते हैं तो ये बोलेंगे कि जो पोषण ऑर्गेनिजम्स को मिलता है जिसके वजह से वो ग्रो करते हैं, वो
फ्लरिश करते हैं और वो अपना बॉडी का सारा प्रोसेसेस करते हैं, वो न्यूट्रिशन, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं. So there are modes of nutrition. There are two modes of nutrition, which are the autotrophic mode of nutrition, as you all know, and heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition, right? So we have been learning about autotrophic mode of nutrition ever since 7th class, 8th class. So you know about it, but to have a more advanced level of knowledge, let us talk about autotrophic nutrition. Let's say in plants, when autotrophic nutrition happen in plants, it is with the help of light. So we call it we call the plants photoautotrophs. Alright, photoautotrophs means, auto means to make their own food by themselves, troph means to feed. Alright, so when plants make their own food with the help of light, they are known as photoautotrophs. Right, likewise we have chemoautotrophs. Chemoautotrophs are those organisms, there are many organisms, there are few bacteria which make their own food with the help of chemicals. These organisms are mainly bacteria which live in very deep sea vents and very extreme conditions. They live in very extreme conditions and they can make their own food with the help of chemicals like inorganic substances, and they convert them into their food. So such organisms which can make their own food with the help of chemicals are known as chemoautotrophs. And we have examples of many bacteria which live in extreme conditions. They live in extreme conditions like deep sea vents, extreme environmental conditions. Environmental conditions, and like deep sea vents. Alright, so these organisms can make their own food with the help of inorganic substances. Okay, but we will discuss about photosynthesis. We will discuss about photosynthesis in little more detail in the coming classes. And we have heterotrophic mode of nutrition. The another mode of nutrition is heterotrophic nutrition, the mode by which organisms acquire their own food. So since we know that autotrophic mode of nutrition in organisms can make their own food, but in heterotrophic mode of nutrition, the organisms are not able to synthesize their own food. They are dependent on other organisms for their own food. For example, us human beings, right? But we have other subtypes of heterotrophic mode of nutrition, and we can divide. We can say that we can also talk about saprophytic mode of nutrition. Saprophytic mode of heterotrophic nutrition. We have parasitic mode of nutrition, and we have holozoic mode of heterotrophic nutrition, about which we will discuss in the next section. The first topic we will discuss in the mode of nutrition is photosynthesis, of which we have discussed a bit earlier in autotrophic nutrition. In the autotrophic mode of nutrition, the plants can make their own food with the help of a process known as photosynthesis. Alright, photosynthesis. Photo means light and synthesis means to make. Alright, so in plants it is a very important process by which food is being made. Alright, and plants, with the help of light and water and carbon dioxide, can make their own food. Alright, plants have a very important pigment in the leaves, which is known as chlorophyll. Chlorophyll is a very important pigment which is required for the synthesis of
food, all right? And without this photosynthesis won't be possible. So there are 3 steps which occur in photosynthesis. First step is when light is being absorbed. Light is being absorbed by, in the first step, light is being absorbed by the chlorophyll. All right, and then in the second step of photosynthesis, what happens is the light breaks down the hydrogen and carbon in water. Oxygen in water. This hydrogen, further in the third step, the hydrogen further reduces the carbon in carbon dioxide, and makes carbohydrate, which is glucose, mainly glucose. All right, carbohydrates, which is mainly glucose, and it is given by the formula C6H12N O6. All right, the whole process of photosynthesis can be summed up in the form of this equation. The equation here, we have carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll, of course, the pigment. Glucose is formed and oxygen is formed as a byproduct. This glucose is the source of food for plants and all other organisms. Chlorophyll is a very important pigment for the photosynthesis of plants, and also carbon dioxide is very important for plants also, which enters the plant with the help of a small pores known as stomata. Stomata are present in the plant's leaves, mostly on the underside of the leaf, and these pores help in the exchange of gases. All right. Now, as you can see in the diagram, there is a guard cell. This is a stoma, which is singular of stomata. Now, when we talk about stomata, as you can see that this is the enlarged view of a stoma. There is nucleus, there are chloroplasts, which are always present in a plant cell, right? And the vacuoles, vacuoles of a plant cell are enlarged. Then there is this guard cell, and you can see the stoma, the pore here. The pores are guarded by guard cells. These guard cells help in the opening and closing of the small pores. This is an enlarged view of a pore of stomata, and the guard cells help in the opening and closing of stomata by shrinking and swelling. All right. Now, why is the closing and opening of stomata important? It is important because when there is no exchange of gases taking place, the water should not be lost by the plant. So, for that matter, the stomata needs to be closed and open, and it helps. The guard cell helps in the opening and closing of stomata. Now, let's discuss about heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition is that mode of nutrition in which an organism is dependent on another organism for their food. Okay? For example, human beings, animals, they are all dependent on other organisms, mostly plants, for their food. All right? So, in this mode of nutrition, let's talk about saprophytic mode of nutrition. Saprophytic nutrition. Saprophytes are those organisms which live on the dead and decaying matters, right? All the organisms which depend for their food and nutrition on the dead and decaying organisms are known as saprophytes, all right? And for example, we have fungi. All the fungus, they depend on the dead and decaying organic matter for their food and nourishment, so they are known as
known as saprophytes, and the mode of nutrition is saprophytic nutrition. Alright, in these organisms, the food is digested outside of the body and then absorbed later on. Such mode of nutrition in saprophytes, the food is first digested on the outside of the body and then absorbed afterwards. Alright, and the next mode of heterotrophic nutrition is parasitic nutrition. Parasitic mode of nutrition. You all know what parasites are, right? Parasites are those organisms which live on other organisms for their food and nourishment and also on their expenses. मतलब वो उनको harm पहुंचाता है और उनसे nourishment लेता है. Right? For example, we have organisms that live on the body and outside of the body. Some organisms live on the outside of the body and they are known as ectoparasites. Some organisms live on the inside of the body and take all the nutrition from the host organism. Ectoparasites, for example, we have leeches which live on the outside of the host organism. The host organism are those organisms from which these parasites take the nutrition and also cause harm to them. Alright, and then we have endoparasites. Endoparasites are those parasites which live inside of the body and take nutrition from them and causes harm to them. Like they live on the other host organism on their expense. उनके खर्चे पे वो रहते हैं, वो उनसे खाना लेते हैं और उनको harm भी पहुंचाते हैं. Such organisms are known as parasites, and this mode of nutrition is known as parasitic nutrition. And we have examples of endoparasite, ascaris, which live in the small intestines. We have endoparasites. There are other plants which live on other plants and take nutrients from them, causing harm to them. And they are, for example, there is Cuscuta plant. These plants live on other plants and derive the nutrition from them, also causing harm to them. This type of nutrition is known as parasitic nutrition, which is a part of which are types of heterotrophic mode of nutrition. Next, we will come to holozoic mode of nutrition, which is also which also comes under heterotrophic mode of nutrition. All right. So the holozoic mode of nutrition, what happens is the organism takes the food as a whole. All right, the food is taken as a complete whole. For example, human beings. For example, we have the example of amoeba, which is a single cell organism, and in this organism holozoic mode of nutrition takes place. All right, so what happens in holozoic nutrition is that when the food is taken, it passes through various steps, which are the ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. Okay, so when you see in this diagram about nutrition in amoeba, it is a unicellular organism, and when the amoeba senses a food particle, there is a pseudopodia. Pseudopodia are temporary arm-like projections, and these food particles are engulfed by the pseudopodia into the body of amoeba. Now the amoeba, this is the ingestion, the step which by which the amoeba takes the food in is known as ingestion. All right, and the next step is the digestion step, which occurs when the food particles travel through the body in the form of food vacuole. In the food vacuole, the food particles are trapped and it passes through the body, and the next step is absorption. The food is absorbed by the cells, and then next comes the step assimilation. These all are part of steps of holozoic nutrition. Assimilation, the nutrients are assimilated by the body of the amoeba, and then when the undigested particles, the food vacuoles, opens to the outside and the egestion of undigested food takes place.
the food particles, when it is engulfed by the pseudopodia, this process is known as phagocytosis. Alright, so amoeba, in amoeba, the whole process of taking in of nutrition is holozoic mode of nutrition, and then when the food is engulfed, the pseudopodia takes the food in, and this process is known as phagocytosis. Another example of an organism that takes their food through holozoic mode of nutrition is of Paramecium. Paramecium, right? So this is also a unicellular organism, and it takes the food through the help of their structures on the body, which are called cilia. It engulfs the food through these structures, and the food is engulfed by the oral groove. Oral groove. The food, which as in amoeba we have seen that the pseudopodia engulfs the food. Here the cilia helps to engulf the food, and the food enters the body through oral groove, right? The food in the form of food vacuole, the food vacuole travels through the cytoplasm, and the digestion and absorption and assimilation, all the processes takes place. Now this process is known as cyclosis. As in amoeba we have seen that the process of taking in of food, it takes place by the process called phagocytosis. Here the process is known as cyclosis, right? In Paramecium the food travels in the cytoplasm, and when the undigested, there are some food is digested and there are some undigested food left, that is taken out with the help of small pore known as anal pore. Okay, so this is the types of examples of holozoic nutrition in unicellular organisms like amoeba and Paramecium. Okay. Next, we will talk about a complex organism, which are human beings. We will talk about nutrition in human beings. And when we talk about nutrition in human beings, we all know that human beings have a very complex system. We have different organs which perform different functions, right? So, when we talk about nutrition in human beings, all the processes, the complex processes and the complicated nutrition system comes to our mind, right? There are the main alimentary canal. The digestive system in human beings have alimentary canal and digestive glands. Okay, in human beings we have alimentary canal and digestive glands, which together perform the function of nutrition, okay, in human beings. There are 5 stages in human nutrition. These 5 stages in human nutrition, as we have already talked about in holozoic mode of nutrition, the 5 steps are ingestion in which food is taken in, digestion, all right. In ingestion, food is taken in, then digestion happens, then absorption, and then assimilation. Assimilation happens in the body, and then all these functions are carried out by various organs in our body, and then egestion of the undigested food material takes place. All right. So the ingestion, digestion and egestion takes place in the alimentary canal, absorption and egestion takes place in the alimentary canal, while assimilation occurs in the whole body. Okay.